Okay, so as you have said, Sanjay ji, correctly, I mean, the basic thing is engineering is a disciplined approach towards making this particular instruction set. Okay, so it actually means, as we will see through the course also, it does not mean just writing a hello world. Why a hello world? Then how to test it out? What is the security nowadays? Security is also important. Even artificial intelligence has come into play. I hope you understand. चैट जीपीटी तो आप में से काफी लोगों ने यूज किया होगा. आई होप सो. नहीं किया तो कोई बात नहीं. वी विल डू इट within our sessions. Not today. Maybe later on, once we are well versed with the basics of the subject. But I'll request all of you to kindly write down your enrollment number, name, batch in the chat box for the attendance, please. If you can. Because otherwise your attendance will not be marked. Batch means what? I'll just type down. I'll chat box में लिख देता हूँ. ठीक है? Please write enrollment number, name, and session. This session is also important because what happens, some students who are from previous sessions might not have appeared. So that is why I'm asking for that. But now let's go on to the subject. So session as in the January session we have to write? January 23, 24, whatever. Okay, sir. Okay. Or July, because in IGNOU there are two things which there are two semesters in which admissions do take place. Fine. So whichever semester or session you are in, kindly write that, because we have to make the attendance accordingly, and that goes to IGNOU. Okay. I hope you understand. So now let me shift to the basic part of it. That is, let's start with the unit. I'll just share my screen. Just give me a minute. Okay. Share it. I hope it is visible to all of you. Yes, sir. Please. Okay. Yes, So sir. Yes. I'm totally taking it from your study material, so that IGNOU has got a wonderful study material, no doubt about that. So let's study already what is there, instead of I could have made PPTs and all that, but let us study from the book itself. I hope you are all okay with it. Otherwise, next time I'll make a PPT. Fine. No, sir. Fine, sir. Yes. So let us first of all, this was the topic, software engineering. Okay. Now, introduction. It is related to basically development of software. All of us know what is software, what is hardware. Who will tell me what is firmware? Sir, software, the things which we cannot touch, but the hardware we can touch and we can use physically. That is known as tangible and tangible. Okay, no problem. Intangible, tangible. But I was asking about firmware. Firmware is type of software which help you to interact with the hardware. If that, in a basic sense. The basic thing is your processor and everything. They've got a assembly language and much more than that. Okay, a computer works with bits 0 and 1. Okay, so
It has got a language embedded, that is firmware. Now that can be changed, that cannot be changed, that is a separate issue. But that is what is firmware. It is there in your mobile phone as well, or any other thing related to IT if you're using, including your broadband routers, everything. There's a firmware out there. Apart from the software, when you configure your password and these things, these are software. Okay. Now the modem itself or the router of your broadband, that is the hardware. But the basic logic that is working behind it is firmware. Okay. I hope if I'm not clear, please ask me anything. Okay. Now what happens is you can develop a program like Hello World. It's easy to write a program in isolation. So that does not involve software engineering. That is just simply coding, okay, or writing a program code. When it comes to software engineering, it is basically making a large software with a systematic approach. That is what is I have already highlighted these things. Now, software is required to maintain compatibility with the hardware. The complexity of software also has changed in recent past. Now, these are all history kind of things, but yes, you should know it. In the present situation, high-speed multiprocessor systems are available and software is required to be developed for the whole organization. Now, what is a particular kind of software that you can envisage which is required for the whole organization? Anything that comes to your mind? सर सर CRM अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जिसका नाम CRM अटेंडेंस लगा software. सकते हैं. That is good example, attendance software for entire organization. But attendance software में madam, I didn't get your name, but still, ये Payroll, कभी आप HRMS, हाँ HRMS payroll MS CRM, Office. MS Office. accounting software. accounting, yes, accounting. Visual Studio. And Visual Studio is a development tool. Not everybody will be using Sir, it. for MS software Office. development purposes. विजुअल स्टूडियो तो ये तो पूरी कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अलग होता है. बात What about MS Office? एमएस ऑफिस भी यार देखो इंडिविजुअल यूज पे है ना. आप एक पीएन आपको चाय पिला रहा था, एमएस ऑफिस थोड़ी यूज करेगा. सर मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं कंपनी. प्रोप्राइटरी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा. मैं ये नहीं बोल रहा प्रोप्राइटरी हो या ओपन सोर्स हो या क्या हो. मैं ये पूछ रहा था एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जो कि वो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अटेंडेंस. नाउ शी इज वेरी पर्टिकुलर एंड डिसिप्लिन्ड. आई डोंट नो, शी वर्क्स इन एचआर डिपार्टमेंट. मैडम आप एचआर में हो क्या? नो सर. तो फिर अटेंडेंस आपको चलिए क्या जो भी है. अटेंडेंस में पता क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, प्रॉब्लम क्या रहती है, बायोमेट्रिक लगा लो, आधार बेस लगा लो, जो मर्जी लगा लो, ठीक है. देयर विल बी अ सेट ऑफ एम्प्लॉयज, जो टॉप मैनेजमेंट होगा, वो कभी अटेंडेंस अपनी लगाएगा नहीं, ठीक है. और एक उसी में नीचे वाला होगा, तो बिल्कुल ही, ठीक है, वो भी अवॉइड करेगा और नहीं लगाएगा. And it is required. But yes, of course, one of the very good example. Actually, the answer I was expecting was ERP, Enterprise Resource Planning. But आप लोगों ने आंसर किया उसे डिफरेंट वे में किया, because Enterprise Resource Planning ERP will contain your attendance, your HRMS, your accounting, all that. You have answered in modules, but it is a software which actually. warehouse management system. एक मिनट दोबारा बोलेंगे आप? Sir, warehouse management system also can be a. It will be a part of. Sir, warehouse management system WMS. WMS will also be a part of SCM, supply chain management. All these things will also be a part of ERP, no? Yeah. So when I say enterprise resource planning, so everything is a part of it. Email system. Email system is of course not a part of ERP, but ERP definitely will generate alerts and all these kind of things, and maybe emails like your pay
payslip and these kind of things to come to your email. But email is important, yes, of course, across the organization, and but it is not a part of ERP. So ERP will talk to email. I mean, in a different manner to keep the employees informed. And just to add to it, even nowadays we use certain SMS gateways, okay, whereby if certain emergency situations are there or certain messages have to be given to all the employees. Let us talk about entire India or entire world. You are working for an organization which is not at a one location. Even at one location, there are 100 employees. How can you tell 100 employees one particular thing that, let us say, there is a warning of fire? So kindly assemble at a or go home. How can you do that immediately? You do it through a SMS gateway. Again, that is not a part of ERP, but that is a organizational software. So you have to. I hope you are getting what I'm trying to say. Okay. Now there is a institute which is known as IEEE. Who will tell me what is the full form of IEEE? Sir, Institute of sorry, sir. मैं दोबारा बोलती हूँ. Electric Institute of Electrical and Electronic Engineering. yeah. So it is the Institute of Electrical and Electronics Engineering. And first of all, please understand that. Sir, yeah. sorry to interrupt, sir. Yeah. Actually, I need to understand, sir, what is exactly work of this enterprise resource planning? What it helps? I don't understand. It is a centralized software which has got all the modules, which will contain accounting, which will contain attendance, which will contain HRMS, Human Resource Management System, which will contain supply chain management. Okay, if you think about a company, it will have all these kind of things in place. So instead of a separate system for everything, Sir, you're saying that it contains certain applications to manage the organization, right? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि it is a one software which will cater to all other requirements. एक आप कर सकते हो कि सब चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बना के डाल लो, ठीक है, सब चीजों के लिए, एचआर के लिए अलग, अटेंडेंस के लिए. एचआर का मतलब होता है अटेंडेंस इज वन थिंग, बट एचआर डज नॉट स्टॉप देयर ना. एचआर में 10 चीजें और होती है. ओके, सिमिलरली अकाउंटिंग में भी योर पे रोल इज वन थिंग, बट beyond payroll there are so many things. Supply chain management, logistics, warehouse, as he was saying. तो ये सब के लिए एक है अप्रोच कि मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर बना लिया मैंने, ठीक है. ओके सर, दैट्स क्लियर. और एक है कि एक ही मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. सो दैट इज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ऑल्सो होता क्या है, बिकॉज इट इज वन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर being accessed or whatever throughout the organization. Okay, so what happens is जो top management है उसको decision making के लिए और आप लोग को भी as managers और developers एक screen पे दिख जाएगा कि where are we standing today. Otherwise क्या होगा कि आपको हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग जाके देखना पड़ेगा and then you have to decide. It is a time consuming process wherein ये एक सॉफ्टवेयर है which is already having all the modules talking to each other. तो मेरे को अगर देखना आज कितने बंदे आए, कितने बंदों की तनख्वाह नहीं देनी. Sir, you are saying particular software or applications? I'm in doubt, sir. What is the difference between software and application? See, ultimately any software is an application. Okay, please understand that, because ultimately वो सॉफ्टवेयर का एक रोल है जिसको वो जब वो when the software is doing that role, it becomes an application for that. So वो HR के एप्लीकेशन हो सकते हैं, अकाउंटिंग के एप्लीकेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है. अल्टीमेटली तो कोड है ना, कोड इज सॉफ्टवेयर. ओके, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू. Okay, sir. Fine, sir. Thank you. नहीं, आई होप आई एम क्लियर. अगर अभी भी है तो मैं बता देता हूँ डाउट.
तो ये जो ईआरपी में बोल रहा था वो कुछ नहीं है, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन अलग अलग बनाने की जगह आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन वाइड ईआरपी डिप्लॉय कर दिया। और एक चीज और बता देता हूँ, चलो खैर आप लोगों ने पूछ लिया मेरे से, आपने पूछ लिया रादर, द प्रॉब्लम इज वर्ल्ड वाइड कि मेरा पेटेंट भी है बट Sir, can you give me example? rate is very less। हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? Sir, ERP example. बोलो बोलो। Sir, am I audible? हाँ हाँ बोलिए। Sir, ERP का आप जो बता रहे थे, can you give example of ERP? ईआरपी होती है ना, एसएपी आपने देखा होगा, ऑरेकल, यही बिजनेस सुना होगा, जेडी एडवर्ड सुना होगा, Yes. इवन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सुना होगा। These are all ERP softwares and they have got modules actually। जो ये बोल रहे थे ना एप्लीकेशन, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो चूंकि ऑल टुगेदर एक ही सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑल टुगेदर एक ही एप्लीकेशन, तो उसमें वो सारे के सारे आपस में बात करते हैं। यानी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस से पेरोल को पता चल जाएगा कि इसको आज ये एब्सेंट है तो उसकी तनख्वाह नहीं बननी है, समझ रहे हो? अगर वो सेपरेट होगा तो somebody has to manually tell the payroll वही he was absent or she was absent and उसकी आज की सैलरी नहीं बननी है। सर पीआरपी का फुल फॉर्म क्या है सर? ईआरपी बोल रहा हूँ मैं, पीआरपी नहीं। पीआरपी मिलना चाहिए आपको खैर। सॉरी सर, पीआरपी अलग चीज है, ईआरपी अलग चीज है। ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, थैंक यू सर। पीआरपी इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। So you, Sir, above programming language is ERP software. Above programming language, SAP. SAP is not a programming language. SAP में ABAP is a programming language in SAP. And HANA is their database. Okay. Yes. So, but altogether, what happens is it is a entire system, na, covering everything, all the functions of our organization, basically. Okay, so we understood. Thank you. सर ईआरपी का कोई एग्जांपल होगा? ईआरपी का भी तो बताया ना, SAP है। नहीं सर, एक लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जो वो कहाँ पे वर्क करेगा, मतलब आप बोल रहे ना कि वो एक पूरा मॉड्यूल रहेगा, तो वो वर्क कैसे, कहाँ, मतलब कोई एक लाइक एग्जांपल किसी कंपनी के थ्रू में करेगा या फिर मतलब एक एजुकेशन सिस्टम में करेगा, लाइक जैसे इग्नू में भी ईआरपी चल रहा है, ठीक है। और हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था। चलो मैं बैंक का एग्जांपल देता हूँ। हाँ बोलिए सर। हम ERP का एग्जांपल सर टैली इज द बेस्ट एग्जांपल। अरे दोनों इकट्ठे में बोलो, एक एक करके बोल लो भाई। सर ERP के एग्जांपल के तौर पे ना हम वो भी ले सकते हैं जो हमारा मेरिट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मेरिट का ही है सिर्फ, वो भी ERP हो सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जैसे हमको कब कौन सी क्लासेस, कौन सा इंट्रोडक्शन सेशन लग रहा है। हाँ ठीक है, वो एक मॉड्यूल है। बट वो एक मॉड्यूल हो गया ना, सर बोल रहे हैं कि एक वो पूरा सिस्टम होता है जो ईआरपी से लाइक सिस्टम, होल सिस्टम जो एक अलग अलग मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ के वर्क करता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे अगर मैं मेरिट बोलूं, आपने मेरिट का एग्जांपल लिया, तो इट्स अ गुड एग्जांपल बिकॉज़ दे आर देयर वेबसाइट एवरीथिंग, दे आर इन्फॉर्मिंग यू एवरीथिंग, फाइन। बट नाउ व्हाट हैपेंस, आई हैव टू स्टिल राइट टू यू इन कि प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। हाँ तो वो चीज वर्क नहीं करेगी ना, क्योंकि वो एक मॉड्यूल ऐसा होगा जो सिस्टमैटिकली वर्क करेगा खुद ब खुद, वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए मोमेंट यू जॉइन। तो यस दे हैव गॉट ईआरपी एट देयर लेवल, बट वेबसाइट बट सर वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो इग्नू का होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे शायद ईआरपी यूज कर रहा होगा, बट स्टूडेंट लेवल पे नहीं कर रहा है। मतलब हम लोगों को मार्क करनी पड़ेगी अपनी अटेंडेंस। लेवल पे यूज हो रहा है ना। देखिए जो समर्थ है, जो इग्नू की वेबसाइट है जहाँ आप लॉग इन करते हो, वो सब स्टडी सेंटर से भी कनेक्टेड है, रीजनल सेंटर से भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। ओके, बट मतलब हमें क्लासेस के लिए तो ऑब्वियसली मतलब मैन्युअली करनी पड़ेगी, क्योंकि
देखो वो LMS है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो अलग से जी बना जी रखा है, तो ऐसा नहीं है। हम्म दैट इज नॉट ERP। आई मीन LMS इज फॉर लर्निंग। तो उसमें आपका ये है कि कितने सेशन आपने अटेंड किए, कितने घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद में कितने मिनट में आपके कितने मार्क्स आए, दैट इज LMS। ठीक है, दैट इज ओके। रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, दैट इज स्टूडेंट लर्निंग। ओके, बट सर वो इंक्लूड तो ERP में ही हो रहा होगा ना, क्योंकि वो एक इग्नू का सिस्टम हो गया अभी अगर हम देखें तो। वो वहां से उसका जो डेटा है आपका हम्म अल्टीमेटली कहीं जाएगा ना ऑटोमेटिकली, आप तो जी नहीं वही कर रहे ना। हमें नहीं मिलेगा, बट हाँ। पंकज सर, आई थिंक ARP और जो एप्लीकेशन हम लोग का बात कर रहे हैं, कंप्लीटली बोथ आर डिफरेंट आई गेस। इट इज ए पार्ट ऑफ, बट ये अलग ही है मेरे को लग रहा है। सर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि ERP के केस में बेसिकली ये है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को ऐसे लिंक कर रहा है कि अगर उनको एक दूसरे की डेटा या सर्विसेज की जरूरत है तो वो That is ऑटोमेटिकली हो completely जाए। coming under that network. You are saying that OSI model, right? वो साइट तो यार सर ये कंप्यूटर नेटवर्क हो कहाँ की बातें कर Yes. रहे हैं सर ये? वो साइट कंप्यूटर नेटवर्क हो गया भाई। कोई बात नहीं, बेसिकली डोंट गेट कंफ्यूज। ERP इज नॉट। भाई बेसिकली ERP एक ऐसा फंक्शन होगा, लाइक एक किंग है। एक अगर हम वैसे एग्जाम्पल है, जैसे देश है, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके नीचे सब वर्क कर रहे हैं, तो लेकिन राजा को तो सब एक तरीके से नॉलेज नहीं, वहां पे डेटा तो सारा आ रहा है ना उसको, मतलब वो चाहे तो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है, और बाकी सारे उसके डिपार्टमेंट हैं। तो ERP एक तरीके से हम वैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यार ERP आप जो बोल रहे हो सही है, उसका बेसिकली क्या है, Sorry to interrupt. लेकिन उस सॉफ्टवेयर में सारे फंक्शन हैं, ये बोल रहा हूँ। आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलग अलग फंक्शन ऑटोमेटिकली उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, वो ERP है, ये बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके ओके सर, गॉट इट। ये बंद करो। So I guess हम एग्जांपल में इंक्लूड होके ज्यादा ही ऑफ टॉपिक चले जा रहे थे। हाँ सर, अब दूसरे टॉपिक पे या फिर अरे इसी कोई में बात आगे नहीं, प्रोसीड करिए। अभी काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। If you can Yes sir. allow me. Yes sir. Okay, then we'll restart. Fine. ओके ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। 2 मिनट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बन के रहो, गरम हो जाता है। Did you guys got your LMS ID and password? Yes. Yes. Good password. In IgnoMail or somewhere else? You'll receive an email. Pardon? You will receive an email, then you will get your credentials in that email. Actually, till now I didn't got any email. That is why I'm asking you. You have to contact IGNO, right? Because we have assignments. We have to submit the assignments. Till I have already sent them mails so many times, but I didn't got any reply yet. Don't mail them. If it is possible, go into the university or
directly contact them. Do not send email because it is a high time, right? We have assignments to submit at the So you guys got a separate mail, right? नहीं, yes. हमको कोई मेल नहीं मिला सेपरेट। वो तो मैंने अपने मेल से वो इग्नू के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया था, उन्होंने यही मेल किया था मुझे। नहीं नहीं, एलएमएस के बारे में बोल रहा हूँ मैं। Yes, I have received a separate mail. For LMS, you just need to put your enrollment number as your username, and you can make a password for it. Yeah. No, there is no sign up method there. Only username and password they are asking. So I know my enrollment number, but ये not putting my LMS क्या है password. भाई? Excuse me, LMS please stop the sound. कोई LMS का लिंक सेंड कर देगा क्या ये मैसेज पे? ये LMS है क्या? LMS पोर्टल है जिसपे तुम अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हो, जिसपे सारा नहीं, उसमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है। तो पासवर्ड तो है ही नहीं मेरा, सिर्फ यूजर नेम है और एक बार पासवर्ड स्पैम में चेक करो ना, आपको शायद से वहाँ पे मिल नहीं जाए। नहीं, बहुत सारे आरसी का भी See, नहीं आया। password is generated by university. Okay, you cannot generate your password yourself. You अभिजीत will receive an email. अभिजीत आप LMS का URL एक बार ये मैसेज में डाल दो क्या? Do we have to मैसेज में आ submit गया। the cover page in assignments LMS का first URL page? तो है, लेकिन यहाँ पे मैसेज में डालने से भी क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट ही करेगा उसका। Hello? पासवर्ड रिसेट करने का ट्राई करो Can ना वहाँ someone पे please अपना explain? एनरोलमेंट